Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge, our pre-market report. Let's start with some important news update. In a major news, India-Pak war front ceasefire announced between India and Pakistan. Now, post this news, SGX Nifty showing 500 points gap up. So after that gap down of 400 points, now we are seeing a 500 point gap up. Yes Bank SMBC will be acquiring 20% stake in Yes Bank from SBI and consortium of lenders. This would be positive for Yes Bank, SBI. Dr. Reddy net profit up 22%, revenues up 8.6%. So this is better than estimate on all fronts. Bank of India net profit up 83%, NII up 21%, and asset quality also improved. After Union Bank, Bank of India also showing a decent numbers. Manapuram net loss at 203 crore versus profit of 560 crore due to impairment of financial instruments worth 919 crore. NII was down 6.7. ABB net profit up 3.3%, revenue up 2.6%. So numbers were below estimate. Even Thermex profit up 8%, revenue up 11.6%, but numbers were marginally below estimate. And in one more good news, global front, US-China trade deal. So US official emerged from China trade talk, touting substantial progress and deal. So because of this, even as US future is also up by 1%. Dow future is up by 1%. So two good news as far as market are concerned. Important result front today: Tata Steel, SRF, UPL, Jyoti Labs, JM Financial, PVR, Inox, KRN, Heat Exchange. These are some important news which are going to. And this is the state of global markets. We can see US market up by 1%. FTSE, CAC, DAX, all three markets are up by 0.5%. GIFT Nifty is up by almost 500 points. And other markets, Kospi, Nikkei, all are up. You might see some one positive day after a 3 to 4 days of tension. Yes Bank, before that news, 10% price up, long built up, OI was also up. चलिए अब OI डेटा फ्रंट पे क्या हो रहा है समझ. You can see here after that war related news gap down के बाद put writers were trapped. We can see decent put unwinding here. But on a positive side 24,000 put पे काफी writing हुआ है on Friday. So it was acting as a support. Late call writers 24,000 24,100 पे call writers भी आ गए. So obviously data was bearish, higher call writing, but 24,000 पे support emerge हो रहा था. And अगर open position की बात करें, highest OI is at put side 24,000 and call side we can see 24,500 as a important call side resistance. तो 24,000 पे सपोर्ट है, 24,500 पे रेजिस्टेंस. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू सी इज जो फ्राइडे के कॉल राइटर्स थे विद दिस गैप अप दे माइट बी ट्रैप एंड उनका कवरिंग आ सकता है, राइट. कीप ऑब्जर्विंग हाउ द पोजिशन बिल्ड्स अप इन दिस कॉल साइड. नाउ निफ्टी फ्रंट पे आई ऑलरेडी डिस्कस 24,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के लिए. वो जैसे ही ब्रीच हुआ, next target was 23,840 and almost we went till 24,900 level तक. And वहां से आज एक gap up के बाद we might open up back above this level. So now we are obviously we are in upper zone of resistance. तो यहाँ पे weekly Bollinger Band के पास trade कर रहे हैं and market is dealing in gaps only, which makes it difficult to take a position. Now obviously Friday को आप bullish position तो carry नहीं करोगे, bearish ही होगा जो भी आप लोगे. And with this gap up, again, bears would be trapped. So ideally, in this situation, जो uncertainty है, for some days, avoid taking overnight position. Focus on intraday. अगर कोई ट्रेंड मिल रहा है वो ट्रेंड में आप काम करो, but avoid taking overnight position. आज की लेवल की बात करें, obviously now gap will disrupt this level, but as on Friday's close, levels were 24,069 was strong above level, जिसके ऊपर 24,125, 24,212 एंड मेजर लेवल पे 24,364 के
लेवल्स अपसाइड रेजिस्टेंस है एंड वीक बिलो लेवल इज 23,960 जिसके नीचे 23,850 एंड 23,681. नाउ ऑब्वियसली विल ओपन गैप अप. तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है. अगर ये क्रॉस होता है तो देयर कुड बी अ bullish move. So now in gaps how I trade is, अगर एक मेजर गैप हो जाता है एनीथिंग मोर देन 150 पॉइंट्स तो आई ऑब्जर्व फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स कैंडल एंड मार्केट देन वी हैव टू सी किस साइड पे ट्रेंड ले रहा है. करेक्ट. बैंक निफ्टी अगेन जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था उसके नीचे आ चुके थे. नाउ विद गैप वी माइट अगेन क्रॉस दिस लेवल. सो इट्स एक आई डोंट नो कब तक ये कंसोलिडेशन चलेगा. एट सम पॉइंट मार्केट हैज टू रिजॉल्व टेक अ साइड एंड एक साइड पे ट्रेंड होना पड़ेगा मार्केट. बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें 53,940 स्ट्रॉन्ग अबोव लेवल जिसके ऊपर 54,275 एंड 54,485 के लेवल्स है एंड वीक बिलो लेवल इज 53,485 जिसके नीचे 53,154 एंड 52,796 के लेवल्स बन रहे हैं. तो दैट वाज फॉर टुडे गाइस. ट्रेड सेफ. हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में. थैंक यू सो मच.